पीठ सीधी, छाती खुली, एकदम आराम से बैठ जाएं। हौले से आंखें बंद कर लें, चेहरे पर बढ़िया मुस्कान। और अब हम शुरू कर देंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, 3 बार ओमकार, जब तक हमारे फ्रेंड जुड़ जाएंगे। हाँ, सांस पे ध्यान। अब हम शुरू करते हैं, एक साथ 3 बार ओमकार। ओम की गूंज पूरे सिस्टम में फैलती महसूस करें। और अब हम पामिंग कर कर, पलके चिपचिपा कर अपनी आंखें खोलें। तो हमारे स्पेशल गेस्ट आज के, जो हमारा स्पेशल सेशन था, हाँ, वो जुड़ गए हैं। किसी ने क्लास के शुरुआत में गुड मॉर्निंग कहा था, मैंने कहा गुड मॉर्निंग अभी जो जुड़ रहे हैं उनको कहना। कैन यू हियर अस? हेलो, कैन यू हियर अस? यू हैव टू अनम्यूट। Hello? Yes. Where are you? But I cannot see myself. Because you have not switched on your video. Okay. Not quite sure what's going on here. I can see everybody else. Yes, but we cannot see you. Maybe you're as well off. No, your video. You have to, you have, I think, you press the start video option that's below. Okay. With you, humor always goes together. Let me see. Can you find it? No, I don't normally have this. I don't normally have this problem. Let me see. Yeah, there is a space for my face, but oh, hold on a moment. Begin video. Okay, let me see. Now, haha! Yes. It's a miracle. So, my dear friends, let us first wish him. किसी ने गुड मॉर्निंग कहा था ना, तो इनके इधर गुड मॉर्निंग है, तो वी कैन। Good morning to everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, so you have had a very warm wishings, huh? And it's afternoon in India, so you see they have calculated the time and they are wishing. You can unmute. Okay. So, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा ये स्पेशल सेशन है, और हमारे साथ जो जुड़े हैं वो पूरी आयरलैंड जो कंट्री है, जो अभी तो भी रिटायर्ड है, पहले वो हेल्थ मेंटेनेंस क्वालिटी चेक का पूरे कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री ये काम करते थे, और अब रिटायर्ड है।
और आराम से जीवन जी रहे हैं, और आज हमको ये अपना कल्चरल डाइवर्सिटी और आपके विचार साझा करेंगे. So I've shared that you're retired from a health maintenance job as a health maintenance officer, and today you will be sharing your thoughts with us. So we once again welcome you. Yes. And then we'll be having questions. Sure. Okay. I'll be translating as well, huh? So can begin. So you'd like me to tell you about where I live. I live in Ireland, and it's a little island. It's out in the Atlantic, and it's on the most western part of Europe. If you were to go any further, you would end up in America on the other side of the Atlantic Ocean. Would you like to translate that, or? I'll translate, a paragraph together, not a sentence, I think, so that the flow goes on. Because you will forget, you also have a flow, right? Yeah, well, I do and I don't. Okay, so would you like me to continue? Yes. I will. Okay, so there's the population of about 4.5 to 5 million people, which is very small compared to India. It's tiny. And so it's quite peaceful. It's quite a wealthy country. There's a lot of money going around being part of Europe. Let me see, the weather today, we get a lot of storms. I forgot to mention that the last time I was speaking. We get a lot of storms, and there's actually one at the moment where winds are up to about 120 kilometers per hour, which is pretty strong. And we get a lot of rain, which makes everything green. So sometimes they call it the Green Isle, because there's so much growth and grass, and because of all the rain. And the temperature in the summer is it can get up to about 20, 21, 22 degrees. And in the winter, it can get down to about -5, -6. Which means that when I go to India, it's very challenging when it's up to 40 degrees. Oh my God, I nearly melt. It's crazy stuff. Yeah, we were occupied by the English, like India was. We were occupied for about 700 years, and they eventually were pushed out in 1922, like your Gandhi organized, pushed them out not that much later. So we share a lot in common. Food-wise, there's a whole range of foods available now. There's a lot of... We'll stop here and I'll translate. Okay, you must have a very good memory, Prakash. I'm writing now. Last time it was not writing. Okay. I made some short notes. Okay, sure. ये बहुत जैसे हम ईस्ट हैं, वैसे ये वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं. ज्यादा आगे जाएंगे तो अमेरिका आ जाएगा. केवल इनके जो देश है इसमें 50 लाख लोग रहते हैं. तो आप सोचिए हमारे भारत में तो बहुत बड़ी संख्या है, करोड़ों में है. तो केवल 50 लाख लोग रहते हैं, इसलिए ये देश अमीर देश है. इनका जीडीपी बहुत हाई होगा. यहाँ पे जो हर इंसान की रहने की अवस्था है बहुत बढ़िया होगी. जो हालात है गर्मी में 20 डिग्री होता है इनके. तो जब ये भारत आते हैं, अगर भारत की गर्मी में आ जाए तो इनके लिए तो बहुत समस्या है, क्योंकि भारत की जब गर्मी होती है तो कितना 40 से ऊपर टेम्परेचर चले जाता है. तो इनको ऐसा लगता है यार तब गए यहाँ पे आके तो. और ठंड पड़ती है तो बहुत जोर से ठंड पड़ती है, -5 डिग्री तक जाती है. आंधी तूफान बरसात आते हैं, इसलिए हरा भरा बरसात हरे भरे जगह.
जैसे हम भी आजाद हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आके बिजनेस करने आई, रूल करने लग गई, वैसे ही इनके देश में भी हुआ। जो इंग्लिश थे वो 700 साल से उनने राज करा, फिर 1922 में जाके ये खुद अपने स्वतंत्र हुए, ऐसा बताया। जैसे हमारे गांधी जी ने मूवमेंट चलाया, वैसे इनके यहाँ पर भी किसी ने स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम फाइटर्स जो भी थे, उन्होंने फाइट करी और इन्हें आजादी दिलाई। यस, यू आर टॉकिंग अबाउट फूड। Oh yes, food. There's a huge variety of food available now. There's lots of food imported from various different countries. And there's lots of restaurants. There's Chinese restaurants and there's lots of Indian restaurants and Pakistani restaurants and Italian restaurants and Lebanese restaurants. It's a whole range of them. And so we used to eat very basic food like potatoes and meat and vegetables. Well, that all changed over the last 40, 50 years. And now it's a whole range of food, going from where we have still potatoes. People eat a lot of meat still, but there's pasta and rice and lentils. Yeah, so it's a big variety of food. Things have changed. Hasn't made us any healthier, but there's a large variety of food. Yeah, our hospitals are very busy, and I think that if people were to eat more vegetarian, and there's only a very small percentage of people are vegetarian. I think it's 4%. I think the country would be a lot healthier. So if you have a vegetarian diet, you be sure to keep to it. Don't let them convince you to eat dead animals, because it's not good. Okay. खाने के बारे में बताया कि वहां पर लोग जो आलू है, हमारे ख्याल से वहां पे आलू का उगाई खूब होता है, तो आलू और मीट खाते हैं। अब तो नया प्रचलन चल गया है, नए नए बहुत सारे हर तरीके के खाने वहां क्या है, मौजूद है। हर तरीके के खाने मौजूद है, लेकिन वहां पे लोगों की स्वास्थ्य की दशाएं बिगड़ती जा रही है। वहां के अस्पताल भरे हुए रहते हैं, क्योंकि वहां पर केवल 4%, कितने, केवल 4% वेज खाते हैं। बाकी आप सोच लीजिए 96% नॉन वेज खाते हैं, इसलिए उनका सबका स्वास्थ्य कैसा है, गड़बड़ है। तो ये कह रहा है अगर आपके देश में आप वेज खा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसको पकड़े रखना, किसी को भी आपको ये मत अलाउ करने देना कि आप मरे हुए जानवर को क्या करो, खाओ। ये बता रहे हैं कि आप वेज अगर खाएंगे तो पूरे जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So is this pizza and all this common meal? Has it come into common meal, or meaning people are having it every day, or it's like India only once in a while? Sorry, what's this? I'm asking about pizza. All this you were saying, no, pasta, pizza. Is this common, like in daily schedule, or once in a while? No, it would be very common, because it's so fast to cook. You know, you just put it into boiling water for about 10 minutes, and then you can throw in a sauce on top of it, and it's done, it's cooked. So it's very fast. So it's very popular. Most houses would have a bag of pasta in the kitchen cupboard. इन लोगों के पास समय की कमी रहती है, तो ये हर दिन ये पिज्जा, पास्ता, मैगी ऐसी चीजें ही खाते हैं, क्योंकि वो जल्दी से बन जाती है, तो ये वो खा लेते हैं। और इसलिए इनकी हालत ये बता रहे हैं कि यस, यू टेल अस अबाउट हाउ आर द यूथ्स एंड द चिल्ड्रन इन योर कंट्री, सो दैट वी नो, बिकॉज दे आर ईटिंग दिस डेली, और young friends are not eating this daily. Young people are more, they experiment a lot more.
So there's a lot of people, a lot of young people would be vegetarian and they're vegan as well. So not only do they not eat meat, but they don't eat products that come from animals. So they do not eat dairy, they don't eat milk, cream, cheese, or so long as something comes from an animal, they won't eat it. So the younger people are more aware of the harm that meat and farming does to the animals and to the climate. So I think young people are just much more aware, and it gives me great hope for the future. बता रहे हैं कि हम तो अभी धीरे धीरे ये सब पिज्जा, पास्ता, गलत चीजें, ये नॉन वेज पकड़ रहे हैं, और ये बता रहे हैं वहां पे जो यूथ्स है, मतलब वो वहां पर जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे सब छोड़ रहे हैं, और वो एक तो उनमें इतनी सजगता आ रही है, वो क्योंकि देख रहे हैं कि इससे जानवर को हानि होती है, इससे वातावरण को हानि होती है, तो वो सारी चीजें छोड़ते जा रहे हैं बहुत सजगता से, और इसलिए इनको आशा है कि इनके देश में जल्दी जो स्वास्थ्य बढ़ने लग जाएगा. लेकिन सो यस. What will we talk about now? So now let us have question answers. Sure. Okay. तो अब हम क्वेश्चन और आंसर शुरू कर देते हैं. हैंड रेस्ड उन्होंने ही करे जिनको क्वेश्चन पूछना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले ललित को ले लेते हैं. यस ललित. सर कल वो पूछा था ना कि 3 दिन बाद वो अहिंसा वाला पूछेंगे, वो क्या था? 3 दिन बाद? वो अभी नहीं, वो अब 3 दिन बाद कल रिमाइंड करेंगे, वो अलग होमवर्क है. हाँ ठीक है. अभी आज आपको जो भी इंटरनेशनल इनके कल्चर को लेकर प्रश्न है और इनके कुछ अनुभव जानना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी उम्र पार करी है, वो हमको क्या करना है, पूछना है. हाँ अलग. कितना समय हो रहा होगा? हाँ वहाँ भी कितना समय हो रहा होगा? वहां पर अभी कितना बज रहा है? वहां पर अभी बज रहा होगा 11:48. Is it right? The Irish time? Yes, that's correct. Okay. तो वहां पे 11:48 हो रहा है. मतलब हमसे 5.5 घंटे पीछे है ये. ठीक है. हाँ अब यस अपराजिता, तान्या, जो भी. सर उनका इंडियन फेवरेट फूड क्या है? What's your favorite Indian dish? And do you have Indian meals as well? Yes. I go to Indian restaurants and I cook a lot of Indian food myself. My favorite Indian dish would be tarka dal with rice. Right? And it's so simple and it's so easy to eat and it's so pleasant on my digestive system. Tarka dal. तो ये बोल रहे हैं दाल में तड़का लगाकर, मतलब उसमें तड़का लगाकर और दाल चावल, है ना. अब लास्ट टाइम a few days ago Kishan uncle visited us, you remember, and he was saying that Indian restaurants at Ireland, okay, we were having just a light discussion, and he was joking that meaning all the other restaurants, whether it be Italian or whether it be at your countryside restaurants, they will not like keep the food. They will just keep it outside, pack it at the end of the day. If someone wants, they can take it. But and they will put a price tag on it, and because they will not keep it for tomorrow. Am I right? Yes. Yes. But what Indian restaurants do is they silently preserve it and again serve the same food tomorrow. Yes. You have noticed this many times. Indian mindset, you see. And
I think they are right, because there's far too much waste over here. It's crazy. Right. No, it's Indian mindset to preserve everything, like not to waste anything. Yes, अभी हमारे they are right. इनको जैसा मैंने बता दिया चना दाल पसंद है। पिछली बार क्या हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ से यहाँ पर एक आयरलैंड के एक ब्रदर अंकल आए थे हमसे मिलने, कुछ ही दिनों पहले की बात है। तो उनने बताया कि वहां के रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, इटालियन और वो यूरोपियन, वो तो उनका एक नियम है कि आज अगर खाना बनाया है तो आज ही क्या करेंगे, वो आपको खिला देंगे, और अगर रात शाम को बच रहा है तो वो बाहर पैक करके रख देंगे, जिसको ले जाना है वो ले जाए। लेकिन ये भारतीय रेस्टोरेंट क्या करते हैं, चुपचाप उस चीज को छुपा के कहीं और रख देते हैं, और वही कल वही परसों वही। तो ये बोल रहे हैं ये बहुत बढ़िया है कि वो वेस्ट नहीं करते, पर आप देखोगे कि बासी खाना भी वो क्या कर देते हैं, पता थोड़ी ना लगेगा, ताकि वो पैसे बच जाएंगे ना। तो भारतीय माइंडसेट है कि कोई भी चीज वेस्ट क्या नहीं होने देता है, होते देता है। पिछली बार ये बता रहे थे। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर उधर सारे बच्चे शेड्यूल में रहते हैं क्या? हाँ सर उधर सारे के लोग शेड्यूल में रहते हैं? एक और बार पूछिए। सर उधर सारे बच्चे रूटीन में रहते हैं? रूटीन, तो do the children over there live a scheduled life? Mean, do they make their routines on pen paper and then follow it, something like that? Yeah. From about age 5, they go to school. They call it primary school, from 5 until 11. And then they change to secondary school, which they are from 11 till they're 17 or 18. And then they either go to work or they go to college. The question is, do they make a daily schedule of their tasks? Meaning, this time I will do this. Do they have limitations, like this time I'll not go to play, this time I'll not watch phone or something like that? Oh yeah. The parents would make sure, that they go to school, they come home, they do their homework, they have their food, they clean up after themselves, and they have a certain amount of time to play. They probably spend too much time on the phone, on their phones. It's a constant battle, because you know how addictive the phone is. So when the children get a phone, they tend to get very lost in the phone. And so there's a battle going on all the time between the parents trying to make them put the phone down, and the children trying to look at it more and more and more. So there's a time, normally there's a time put down that, you're only allowed to use the phone for, say, half an hour from the time you come home from school. But it doesn't tend to work. A lot of people are just looking at their phone for way too long, and it's not good for the brain. So, schedule, पेरेंट्स इंश्योर करते हैं कि जो उनका स्टूडेंट, जो बच्चा है, वो सब चीज काम पर करे, पर ये कांस्टेंट लड़ाई रहती है, क्योंकि उनने अपने बच्चे का शेड्यूल लिख दिया है कि इसको आधे घंटे फोन चलाना है, लेकिन हाल ऐसे ही कि फोन हाथ में आता है तो वो ज्यादा देर तक चलाता है। तो पेरेंट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और कैसे भी उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ये, पर इनका एक शेड्यूल जरूर होता है और वो अच्छे से फॉलो होता है। एक और बात जो नहीं सुनाई में दी, कि जो सारा सफाई है ना, घर के काम का सफाई भी वो बच्चों को अलॉट करा जाता है। सो दिस क्लीनिंग अप ऑफ थिंग्स, हाउस कोर्स, इवन दे आर गिवन टू द चिल्ड्रन। यस। तो देखो, अपने को, मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर जने कुछ घर का साफ सफाई मेरे ख्याल से नहीं करते होंगे, लेकिन वहां पर ये डिवीजन है। मतलब जैसे हमारे मम्मी कर देती है ना, तो खुद की थाली वो खुद ही धोते हैं और खुद के कपड़े खुद ही धोते हैं, तो वो सब कुछ खुद सीखते हैं और खुद ही करते हैं।
सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं. एंड एट what age do they leave home? They would leave home about they leave home about maybe 19, 20 years of age. 19-20 साल की उम्र में घर छोड़ देते हैं, अपने खुद का रेंट लेते हैं, खुद का रहते हैं, खुद का अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं. देखो कितना अलग है. हाँ, that is beginning to change as well, because houses and apartments have become so expensive to rent and to buy that a lot of people are staying at home longer with their parents because they cannot afford to move out. तो अभी थोड़ा थोड़ा भारत जैसा हो रहा है, क्योंकि वहां पर अपार्टमेंट्स महंगे होते जा रहे हैं और उनकी थोड़ी जो एक्सपेंस है वो ज्यादा है, और इनकम थोड़ी, जो अगर 19 साल का बच्चा है तो उसको थोड़ी कम इनकम होती है, इसलिए वो अपना घर नहीं ले पा रहा है. पर ज्यादातर समय पास्ट में ये 19-20 साल में अपने घर से निकल के नए जगह पे रेंट पे रहने चले जाते थे. ये इनका कल्चर है. हाँ, अब हम वंदना को लेते हैं. यस वंदना. यस सर, वहाँ पर कौन कौन से खेल खेला जाता है? सर वहाँ पर कौन कौन से खेल खेला जाता है? Games, sports. Yes. Yes, games and sports. They not as much as they used to, again because of the phone and the television. They've gotten quite The most played game over there, meaning in India, they play cricket. the most Yes. played game is probably soccer. Soccer. I think soccer. Soccer, and then after that, rugby. Rugby. Yeah. Oh. So, And then a very small number play cricket. बहुत कम मात्रा में जने क्रिकेट खेलते Very हैं. small number play cricket. ज्यादातर जने वहां रग्बी और सॉकर खेलते हैं. ठीक है. By soccer, football, if I'm right. Yes. Yes, Shivam. सर अपने यहाँ जैसा मौसम वहाँ भी ऐसा ही रहता है? मौसम का क्वेश्चन तो आ गया मौसम, और वो तो बता भी दिया. शिवम ने लेट ज्वाइन करा है, इसका मतलब. हाँ, यस सर. ठीक है. चैतन्य. सर जैसे हमारी इधर ट्राइब्स रहती है, जैसे उनकी इधर भी रहती है. So at Ireland also, do they have this local tribes? Like there are various local tribes in India. No. We don't have any tribes, and we don't have any caste system either. It's just, no, it's fairly level. Of course, there are people that will always have a lot more money than some other people, but it doesn't break down like that. So no, there's no tribes, there's no separation. Really nice. वहां पे कोई जातिगत आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. सब हाँ, हो सकता है कि किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास है, लेकिन जातिगत आधार पे, जैसे हमारे यहाँ पर जातिगत आधार पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन है ना. इलेक्शन भी जातिगत आधार पर लड़े जाते हैं, बहुत सारी चीजें जातिगत आधार पर होती है, लेकिन वहां पर अब देखिए कोई जातिगत आधार नहीं है, इसलिए वहां की उन्नति ज्यादा है. हाँ, बट आई थिंक रिलीजियस you see discriminations, do they exist? No. तो कोई धर्म के आधार पर भी वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. बहुत बढ़िया है. वो धर्म, जाति, इन सबको इतना नहीं देखते हैं, वो केवल वर्क, उसका प्रोफेशन, उसकी स्किल को देखते हैं. देखो बहुत बढ़िया है ये तो. हाँ, really nice that there is no caste discrimination. Yeah, no, it's very peaceful in that regard. इसलिए शांतिपूर्ण देश है, बता रहे हैं. ठीक है, तो हम भी हम अपने आइडियाज ये जो बता रहे हैं उनको लिखें कि कैसे हम हमारे देश की उन्नति के लिए वर्क कर सकते हैं. हाँ, बहुत बढ़िया. श्रुतिकोण.
सर श्रुतिका नहीं, श्रुतिकोना होगा, श्रुतिकोना होगा, श्रुतिकोना नहीं। श्रुतिकोना। सर उनका एज कितना है? Age is around 68 if I'm right. आपका what's your age? My age, I'm 67. 67. 67. Thank you, sir. I'm very young. बोल रहे हैं बहुत अभी तो बच्चे हैं वो। ओ देवोश। सर अमेरिका में योगा नहीं होता क्या? ये अमेरिका से नहीं है, अमेरिका इनके थोड़ा आगे है, ये आयरलैंड में। तो डू दे डू योगा ओवर देयर? Is there this trend of yoga? Yes, there's quite a number of yoga classes held throughout the country. It has become more common over the last 10 years, but it's used mostly as a form of exercise. Sorry, my doorbell has gone, so but it's used mostly as a form of exercise rather than a spiritual pursuit. Yes. Yes. तो वहां पे योग होता है, लेकिन केवल जैसे व्यायाम होता है, व्यायाम की जैसे योग होता है, हमारे यहाँ पर भी अभी ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। योग आध्यात्मिकता के लिए और साथ में होलिस्टिक डेवलपमेंट की जगह हम केवल शारीरिक एक फिजिकल ट्रेनिंग के रूप में योग हो रहा है। वेयर आर यू? खो गए। इनसे हम बोलेंगे 2-3 योगा पोज करके दिखाओ। हाँ, ओके, सो यू कैन शो मे बी 2 to 3 योगा पोजेस यू नो। आर यू डूइंग योगा डेली? हाँ, Yes. okay. Let us see. Oh no! Oh no way! ये हर दिन योग करते हैं, ठीक है? I can do the tree, but the camera isn't good enough. तो वो बोलते हैं वृक्ष आसन कर लूंगा, लेकिन वो मोबाइल उस तरीके से सेट नहीं है ना, तो ढंग से दिखेगा नहीं। एनीवेज, अब ऋतिका। सर हेल्थ ऑफिसर का क्या काम होता है? हेल्थ मैनेजमेंट ऑफिसर का क्या काम होता है? So please explain them your work in short. What did you do during the job of health maintenance? Most of the time, I would go around the county and inspect food premises to make sure that they were clean and to make sure that the food was been handled in a safe सर मैं अपना पेट दिखाना चाहती हूँ। and clean. That's basically it. And if they did not look after the place, I would write them a letter, and if they continue to not look after it, they'd be brought to court and they'd be prosecuted. And then if they were very bad, we could close them down. So that was it. इनका काम था पूरे आयरलैंड में पूरे देश में घूमना और इंस्पेक्शन करना, चेक करना कि यहाँ पर खाना सफाई से तो बन रहा है, और अगर रेस्टोरेंट्स और हर जगह पर, चाहे जहां पर भी मेस होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, चेक करना कि यार यहाँ खाना सही से तो बन रहा है, और अगर खाना सही से नहीं बनता तो ये लेटर लिखते हैं उनको, और अगर लेटर से भी वो खाने की क्वालिटी सही नहीं होती है तो फिर उनको कोर्ट ले जाते हैं और उनको बंद करवाते हैं। तो इनका ये जीवन भर ये काम था। हाँ, ठीक है। पूजस्मिता। सर वहाँ पर स्नो गिरता है क्या? हाँ, स्नोफॉल। Yes, the question is about snowfall. Snowfall. Maybe once a year we might get some snow. It would only be about an inch or two
Sometimes we would get a storm where the snow would stay for a week or two, but that doesn't happen very often. So we don't get a lot of snow. It's साल में an occasional thing. हाँ ओकेजनल साल में एक बार कभी कभी हो जाता है 1 इंच ऊपर तक हाँ 1-2 इंच ऊपर तक कभी कभी यस आदर्श आयरलैंड में ऐसा कौन सा जगह आयरलैंड में ऐसा कौन सा खास जगह घूमने का है घूमने का जगह है ठीक है इसको क्या बोलेंगे एडवेंचरस प्लेसेस हाँ what do we say all these monuments or something like that is there any location where tourists can visit Oh yes. There's loads and loads of places. Because we're in the middle of, because we're in the Atlantic, so if you go out, you can travel all around the coast, and it has very beautiful scenery. And then there's old castles. Yeah, there's lots. पुराने किले और बहुत सारे वहां पर घूमने की जगह है आयुष सर हम लोग यहाँ 3 दिन बारिश होती है वहाँ कितने दिन बारिश होता है यहाँ हम लोग की 3 दिन बारिश होता है वहाँ कितने दिन बारिश होता है खुशी क्या पूछ रहा है आयुष सर पूछ रहा है कि वहाँ हमारे यहाँ 3 दिन बारिश हो रही है वहाँ पे कितने दिन होता होगा 3 दिन बारिश हो रही है मतलब हम लोग यहाँ पर 3 दिन बारिश होती है तो वहाँ पर कितने दिन बारिश होती है वहां पर बारिश होती है इसलिए वो हरा भरा जगह है हाँ वहां पर भी जो आस्किंग अबाउट रेनफॉल We get a lot of rain. It rains, I'd say, at least 50% of the time. साल में 50%. So it's like Chennai, Madras of India. Yeah. I'd say it's even more wet because it happens throughout the whole year. It doesn't matter whether it's the winter, spring, or summer. We get rain. I'd say every second day. हर दूसरे दिन बरसात होती है वहां पर बहुत बढ़िया हम जहाँ स्कूल में मद्रास में स्कूल में रहते थे हम वहां पर 2 बार बाढ़ आई एक बार तो इतनी भयंकर बाढ़ आई कि हमको स्कूल से बोट से फिर लेकर गए बहुत दूर तक बहुत बढ़िया I was telling about flood at Madras when we were in our school days. Yeah. Wow. Himadri. I think that's why I've got no hair on my head because of all the rain over all the years. खूब बरसात के वो ओले पड़े ना इनके सर पर इसलिए इनके बाल नहीं हुए बोल रहे हाँ हिमाद्री सर वहाँ पर फेस्टिवल कौन होता है asking about festivals is this Halloween this festival of your place if I'm right Yes. Halloween happens in October, and they say it's the time of the year when the night is closest to the day and when the dead are closest to the living. So they call it Halloween, and people get dressed up in all sorts of masks and all sorts. This has started in India and now this is taking a trend in all this good schools of India. I don't know why. Okay. Wow. Last 3-4 years only, I think. Okay. But the biggest festival here is Christmas. That's the biggest one. That seems to go on for about 3 weeks.
Christmas and Santa Claus and all of that stuff. Mostly because I think most of the population is Christian, if I'm right. Yeah, well, most of the population was Christian, and now there's not very many left because people have left the church, and there are very few priests left. So there's no religion, there's no general religion being practiced now, which तो is वहां very पर strange. दो मेन फेस्टिवल जो मेन फेस्टिवल है वो क्रिसमस है। क्रिसमस में इनका 3 हफ्ते का छुट्टियां होता है। और हमारे यहाँ पर भी आजकल आप देखोगे कुछ स्कूलों में हेलोवीन बनाया जाता है, जहां लोग अलग अलग तरह से चुड़ैल और ऐसे ऐसे बनकर आते हैं, डराते हैं। आप जानते हैं ये फेस्टिवल हेलोवीन? हाँ हाँ, ठीक है। आस्था। सर मेरे को उनका पेट देखना था, पेट हाँ। देखना था। Wanted to meet your pets. Oh, my pets. Hold on, and I'll see, can I find our dog George? इनके कुत्ते का नाम जॉर्ज है। Hold on. तो ये जितने ढूंढ रहे हैं उसको, तो मेरे ख्याल से इनका दिन इसमें ही निकलता होगा ज्यादातर। This is George. Hey, George. Say hello. Can you see him? Yes. And there's and we have Helga, the cat. Yes, George and Helga. If I'm spelling it right. Yeah, they don't know now that they're famous all over India. मतलब वो नहीं जानते कि अब ये पूरे भारत तक पहुंच गए हैं, क्योंकि वो जानवर है ना, इसलिए वो नहीं जानते कि उनकी चर्चाएं भारत में भी हो रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। हम आते हैं। Okay. ललित का तो नंबर आ गया, जिसका नंबर आ गया ना। चैतन्य। सर क्या वहाँ पे फार्मिंग करते हैं? फार्मिंग तो कितने % करते हैं? Most of the India is based on agriculture. What about Ireland? It used to be all agriculture, and there still is a lot of agriculture. They grow a lot of cattle for beef, and a lot of it is exported to the UK and to Europe. But most of the money now is being generated by the microchip companies. So Google and the Amazon, the big multinationals, they have a lot of offices over here in Dublin, the capital, and they generate a huge amount of money. So farming has gone down. Well, it's not gone, but it's not as important as it used to be. It's not as big a part of the economy as it used to be. because उनकी जो इकोनॉमी का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन अब मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पर आ गई है और ज्यादातर जो इकोनॉमी है चला रही है वो मल्टीनेशनल कंपनियां चला रही है। ठीक है, चैतन्य हो गया। नीलेश। Sir, is there any traditional cloth in your country? Traditional clothes. Traditional clothes, yeah, there's not really much of a tradition. I know that when I go to India, I can see all of the saris and the kurtas and that. Over here, it's a mixed bag. It's like as if we have taken on all the fashion of Europe. So just wearing dresses and skirts and trousers for the ladies, and for the men, it's just
trousers and shirts and jumpers and whatever you find in the shops. So there's no real traditional dress now. We dress mostly like most of the Europeans would dress. There's not a great difference throughout Europe. और इनका जो ड्रेसिंग पैटर्न है, इनका जो संस्कृति, इनके अब सांस्कृतिक जैसे हमारे कल्चरल ड्रेसेस होती हैं, साड़ीज, और भारत में तो बहुत सारे तरीके के कपड़े होते हैं, मतलब जो फैब्रिक होता है वो भी इतने सारे तरीका का, इनके पास ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कोई भी दुकान में जो भी मिलता है वो जाकर ले आते हैं। तो ये पूरा यूरोप का कॉपी कर रहे हैं। तो हमको ये समझना है कि अब हमारे देश में तो बहुत सारे तरह के फैब्रिक्स, अलग अलग तरह के कल्चरल ड्रेसेस मौजूद है। हमको उनको क्या करना है, पकड़ के रखना है। इनके पास है नहीं, इसलिए ये वो पूरे यूरोप का कॉपी करते हैं। और हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारे जो अभी बड़े टायर सिटीज में धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, तो वो सब भी वही कॉपी कर रहे हैं। लेकिन वो इनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इनको वहां पे हमारे जैसे कपड़े मिलते नहीं है। तो हमको हमारे जो कल्चरल ड्रेसेस हैं, जो कल्चर है, उसको बहुत प्रिजर्व करना है। ठीक है, वो बता रहे हैं टॉकिंग अबाउट प्रिजर्विंग द कल्चर एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ इट। Yeah. Because you see the trend is follow the West. So I know, and it's a very foolish thing to do because we're on the road to nowhere, I think. बोल रहे हैं कि हम जो कॉपी कर रहे हैं ना वेस्ट को, बोले ये तो बहुत बेवकूफ भरी बात है, क्योंकि उनको किसी को नहीं मालूम है कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो हमारा जो कल्चर है वो बहुत ग्रेट कल्चर है, हाँ, उसको प्रिजर्व करना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब हमारे हैं हमारी ये 5 सिस्टर्स फ्रॉम आसाम। गुड इवनिंग सर। सर, उनके हिसाब से हमारा जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? Oh, this is a very thoughtful question. What is your viewpoint? What should be the goal of these little children? This types of question, I think you'll get only in India. I would like your goal to be the same as my goal, which is to realize that God is within and to realize that. Because I think all of the world has conspired to make us think that our happiness is out there somewhere in a bigger car or a bigger house or nicer clothes. And it's a lie. Our happiness is inside. And I would love everyone to realize that. तो इनका जो उत्तर है वो हम सबके लिए, हमको आज ये लिखना है कि ये बता रहे हैं मेरा और आप सबका लक्ष्य ये एक ही है, जो हमारे अंदर मौजूद ईश्वर है, उन तक हमको पहुंचना है, उनको रियलाइज करना है। उन्होंने बताया जो भी सुख है, जो भी हम खुशी ढूंढ रहे हैं, बोले वो हमारे अंदर है। और इनके देश में आप देख सकते हो कि ये तो अमीर देश है, तो लोग हर तरह के बाहर से सुख पूरा कर सकते हैं। आर पीपल हैप्पी विथ ऑल द थिंग्स, बिग हाउसेस? यस, मास्किंग, people have big houses over there, big cars. Are they really happy? No, they're not. They're not happy. And they know, it's like as if, I remember when I was very young, I might want something, some toy, and I managed to get the toy after saving all my money. And then after a day or two, having bought it, thinking, oh, that was nice. What do I want now? So it's like, yeah. Never ending desire. Yeah. बता रहे हैं कि वहां पे सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, और वो सब उदास।
वो सब उनके बहुत दुखी हैं और बोलते हैं वो ये ऐसा ही है कि जैसे आप सबको अभी खिलौने की इच्छा है ना, और ये खिलौना आपको दे दिया जाए कि किसी को अच्छा वाला मोबाइल चाहिए, जो भी खिलौना, और वो खिलौना आपको दे दिया जाए, उसके थोड़े दिन बाद आपको लगेगा यार अब मैं और नया क्या लाऊं। तो वहां पे लोग ऐसे ही बस परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे हम क्या हों। और आप सोचिए, हम तो अभी, भारत तो अभी इन सब चीजों के पीछे भागना चालू कर रहा है ना। हमारा तो जो संस्कृति है वो है संतोषी सदा सुखी, मतलब आराम से कंटेंट रहे, हमारा वर्क अच्छे से करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, लेकिन अननेसेसरी इकट्ठा। तो ये बता रहे हैं कि हमारा सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है हमारे अंदर मौजूद ईश्वर को प्राप्ति। विचारशील प्रश्न और बहुत विचारमय उत्तर। आई थिंक दिस इज अ वेरी डीप टॉपिक फॉर our dear young students realizing God. Yes, it is. It is. But maybe it might be nice to hear at a young age. Yes. Who knows? तो बोले अभी बचपन में ही आपको बता देना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ गया उनका उत्तर तो आपको बहुत फायदा होगा। बचपन में बताना महत्वपूर्ण है। ठीक है आदर्श। सर ये लोग पहले से इंग्लिश जानते हैं फिर स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल क्यों जाते हैं? बहुत सारे, इंग्लिश तो केवल कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज है ना, मैथमेटिक्स भी तो सीखना है, दूसरा सब्जेक्ट। आस्किंग वेदर if you know English already because it's spoken at home, then why do you go to school? Yes, we all talk English over here. We used to have our own language, the Irish language, but when the English came over and invaded, they made it very difficult for people to talk their own language. So we had to learn English, and then the Irish language died away. So there are some little parts of the country where they do talk the Irish language, but most of the time, most of the people we talk English. Yeah, Right. That's the way it is now. वहां पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है घर में वो अपने अंग्रेजी बात करती है, क्योंकि वहां पर जब अंग्रेज आए तो वो अपनी उनने भाषा भी इनके अंदर इस तरीके से डाल दी कि अब बहुत कम जने जो होंगे वो आयरिश भाषा बोलना जानते होंगे। और आपको हम एक और बात बताते हैं। सी इन इंडिया देयर इज दिस थिंकिंग दैट वन हु स्पीक्स इंग्लिश इज रियली सुपीरियर, समथिंग लाइक दैट, एंड ऑल वांट टू लर्न इंग्लिश और समथिंग लाइक दैट। हाँ, It's mad. तो बोल रहे बेवकूफी है। आप अपनी जो भाषाएं हैं वो सीखिए, वो अच्छे से सीखिए। ये अंग्रेजी सीखना और सब सीखिए, हमको सब कुछ आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, लेकिन हमारी जो हिंदी है, हमारी जो भाषाएं हैं, ये भी बहुत अच्छी है। यू सी, ये इतनी डीप और गहरी भाषाएं हैं। संस्कृत में आपको बताया ना 52 अल्फाबेट्स हैं। कितने? 52, और इधर तो 26 ही है। तो बहुत हमारी गहरी भाषा है, बहुत गहराई से हमारे संस्कृत से निकली है। हाँ, फॉलो करें उसको। ठीक है, नाउ वी विल हैव अ रैपिड फायर बिकॉज आई डोंट थिंक वी हैव सो मच टाइम। हमको तो रैपिड फायर मीनिंग दे विल आस्क वन क्वेश्चन एंड यू विल आस्क इट, यू विल आंसर इट विद इन वन लाइन। हाँ, आर यू रेडी? हाँ, let's see. Yes, Naveen. पूछो। आए हैं? हाँ, आप कितने बार इंडिया आए हैं? how many times have you visited India? I have visited India six times. 6 बार। शानवी। सर आप पूजा होती है? अगर सही पूछा तो पूजा होती है। पूजा का पूछे? हाँ, फिर से जल्दी। वहाँ पूजा होती है, वहाँ मंदिर होते हैं? Are there temples and worship goes on? Yes, we have lots of churches
but there are not many people visiting them anymore. तो वहां पर ये मंदिर नहीं चर्चेज होते हैं और आजकल लोग चर्चेज नहीं जाते हैं. I think there are temples as well, if I'm right. It's the same thing, yeah. Yes, yes. Yeah. जल्दी खुशी. सर वहाँ का नेशनल फ्रूट कौन सा है? Is there anything national fruit? The call, the sound is beginning to break up and you're beginning to freeze. Asking about is a national fruit. Are you able to get me? I'm sorry. Okay. Asking about national fruit. The national fruit. We grow apples. We grow apples. Lots of apples. But that's it. वहां पे ज्यादातर ये भी उगाई जाती है. हाँ, ठीक है. We wish that we could grow mangoes, but we can't grow mangoes over here. Mangoes grow in our farm here. Really nice. वहां पर आम नहीं उगाए जा You're सकते. so lucky. In Madras also, there was this mango garden, and we used to eat a lot of mangoes. If you remember. Yes. सर वहाँ पे सूर्योदय कहाँ से होता है? Sun rises from east. Yeah. तो हर जगह सूर्य उदय ईस्ट से ही होता है. If I am right, everywhere the sun rises from the east only because. Am I right? Yes. Yes. Yes, you are right. Yeah. Comes up in the east and goes down in the west. West. Yeah. अब एक मिनट कौन रह गया है? तनु को नेक्स्ट लेंगे. एक बार जो रह गए हैं उनको लेते हैं. शिवम जल्दी जल्दी फास्ट. सर वहाँ के नेशनल पक्षी क्या है? नेशनल बर्ड. यस. The national bird, perhaps the robin. Do you know the robin? It has a red breast. The robin redbreast. रॉबिन रेड ब्रेस्ट, लाल कलर की छाती होती है. ठीक है. गीतिका. सर उनके कितने पेट्स हैं? कितने पेट्स है? How many pets do you have? If I'm right, 2. Hello. You're breaking up. Oh. Asking 2 pets हैं. If I'm right, you have 2 pets, right? Number of pets. मेरी आवाज केवल इनको ही नहीं सुनाई दे रही है, आप सबको भी नहीं सुनाई दे रही? आप आ रही है? ठीक है. उनका इंटरनेट इश्यू है. मे बी टर्न ऑफ योर वीडियो बिकॉज यू हैव सम इंटरनेट इश्यू. Yeah, there's a problem with the sound. Yes, now it's all right. Okay, yeah, it's back. अर्नव. क्या नेशनल एनिमल्स है? सर नेशनल एनिमल. Taking your good National test. Animal. I don't think I am the deer. The deer would be the national animal. वो सोच के बता रहे हैं. हाँ तो कर रहे ना. I've told them it's thinking and telling. I've said them is thinking and telling, so better you do your research and find out.
If Yeah. just joking. Okay. Yes. So we will take last three. Okay. So Okay. किनका नंबर नहीं आया? Vivo 1724 नाम क्या है? फास्ट. इंटरनेट तकलीफ है Vivo का. हाँ, सुना ही नहीं दे रहा. तो सेंटा क्लॉज है सच में. हाँ, वहाँ सेंटा क्लॉज सच में होता है. सेंटा क्लॉज तो उनका आंसर देखते हैं. इज देयर एनी रियल सेंटा क्लॉज ओवर देयर? Yes, he comes every Christmas. हर क्रिसमस आते हैं. हाँ. अब किसका नंबर एक बार भी नहीं आया? आ गया है. तो हम अब रिपीट ले रहे हैं. यस तनु. सर उनको क्या कभी गुस्सा आया है? अगर आया है तो क्यों? गुस्सा. Have you ever got angry? Oh, yes. Why? Oh, it's so long ago, I can't remember. बहुत पहले गुस्सा आया. तो आप देख सकते हैं कि ये जो जने है ना, ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं और उसको डीपली. हम तो ऐसे ही बात सुनते हैं, चलो कान से एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया. लेकिन हमने ऑब्जर्व करा है ये बहुत सिंसियरली उसकी प्रैक्टिस करते हैं. और मैं जहां तक इनका स्वभाव जानता हूं, तो हर समय कुछ ना कुछ हंसी मजाक करना. और तो बहुत क्या बोले, आंसर क्या दिया, बहुत पहले कभी गुस्सा आया होगा, मेरे को याद नहीं है. तो आप सोचिए. और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे ही इंसान बड़ा बड़ा होता जाता है, उसका और गुस्सा बढ़ता जाता है. तो आप देखिए. सो हाउ डू यू मैनेज टू बी एंगर फ्री? दैट इज आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एंड विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन. I think it's because of all the meditation that I have done. I just don't tend to get angry anymore because I seem to accept a lot of things that would have annoyed me before. तो you see, तो हमको ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम ये जो शब्द बोल रहे हैं ना, वो याद कर ले. मैं मेरे पिछले जो समय में मैंने खूब ध्यान करा है. ये हर दिन ध्यान करते हैं, और इस ध्यान करा है इसलिए मेरे को पहले जिन चीजों पे गुस्सा आ जाता था, अब मेरे को मैं हर चीज को स्वीकार करने लगा हूं. तो इस उम्र में जाकर ये बता रहे हैं कि अब मैं चीजों को स्वीकार करने लगा हूं, इसलिए अब मेरे को कुछ गुस्सा नहीं आता. तो आप इन चीजों को नोट, आप बस ये शब्द याद कर लें, स्वीकार. हाँ, अब मैं स्वीकार कर लेता हूं, इसलिए गुस्सा नहीं होता. तो आपको धीरे धीरे जब आप उम्र बढ़ते जाएगा तो ये चीजें समझ में आएगी. बहुत बढ़िया. तो तनु ने तो आज दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे. हाँ, तो और डियर तनु हैज आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चंस, यू सी. बोथ द क्वेश्चंस वर बाय हर. Yes. तो एक लास्ट, वी आर टेकिंग अ लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये उनका टाइम लिमिटेड है. वहां पर ना टाइम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो हमने उनको 5 से 6 दिया था. आई एम सेइंग एट योर कंट्री दे फॉलो very strict sense of time. So I gave you gave us 6 till 6 o'clock, meaning Irish time 12:30, and now we are reading. So can we take 2 more minutes? Sure. हाँ, तो उनने अपने को 2 मिनट और दे दिए हैं. यस आदर्श. सर मैं उसी समय कर लिया हूँ. अच्छा, ललित. होली दीपावली मनाते हैं. Holi and Diwali. Do they celebrate Holi and Diwali over there? Of course, Indians over there would be celebrating. Yeah. No, we don't. We don't celebrate Diwali here, but we have a large an Indian community over here, and they celebrate it. And sometimes they will appear on television because it's just so colorful and so lovely that it becomes part of the news on the television.
तो वहां पर जो भारतीय जन है वो सेलिब्रेट करते हैं और फिर धीरे धीरे सब उसमें जुड़ते हैं, क्योंकि इतना रंग बिरंगा फेस्टिवल होता है। हाँ, तो फिर वो न्यूज में भी आता है उनके। हाँ, तो इसी के साथ विद दिस वी ऑल, me personally and all our dear young friends, would like to thank you for taking out your precious time and sharing your culture with us and having such a nice discussion in such a loving way. So thank you. Well, thank you very much for having me, and thank you for all the lovely questions. And शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो। I'll talk to you soon. Yes. Okay. Namaste. तो हम एक साथ सब इनको बाय कर देंगे। I am unmuting all so they can say bye and then we leave. Bye, sir. Okay.